Hi guys, I don't know about you, but मेरे लिए सेल्फ केयर बहुत ही ज़रूरी है, which includes catching up on sleep, eating well, exercising, and also looking after my hair and my skin. Today is Sunday, मतलब that day of the week when I indulge in self care and pamper myself. और मेरा favorite part है एक long shower routine. In the shower, I feel like I can wash away all the stress of the week, emerge as a new person. I feel relaxed, pampered, and great. So let me walk you through my shower routine and how I pamper myself. First, I start my long shower routine with a homemade hair mask. I think hair fall एक बहुत common problem है and I have an easy solution for you. A homemade hair mask. Eggs and yogurt are the two key ingredients in my homemade hair mask, which helps to reduce hair loss and also eliminates dandruff. So आज हम इस mask को apply करेंगे using a comb. I will first section my hair, then apply the hair mask from the roots to the shaft. अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप इस हेयर मास्क को महीने में एटलीस्ट 2 बार ज़रूर यूज़ करें. आई विल कीप दिस मास्क ऑन फॉर हाफ एन आवर और फिर हम इसे वॉश करेंगे. नाउ आई हॉप इनटू द शावर टू यूज़ अ बॉडी वॉश व्हाइल माय हेयर मास्क कंटिन्यूज टू वर्क इट्स मैजिक. आई प्रेफर यूजिंग अ जेंटल बॉडी वॉश. इस बॉडी वॉश की फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट है. इन माई एक्सपीरियंस अगर आपको हॉट शावर्स पसंद हैं तो keep them short for like 5 to 7 minutes or so. Let's move on to our next step. The new Veet Pure Hair Removal Cream is my go-to product for hair removal. मेरे legs पे काफ़ी visible hair growth है. And since I like to keep them clean and smooth, आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही simple तरीका for a quick and easy hair removal in the shower itself. I have been using the new Veet Pure Hair Removal Cream for a while now. और ये बन गया है मेरा गो टू प्रोडक्ट फॉर एनी टाइम एनीवेयर हेयर रिमूवल. ये हेयर रिमूवल मेथड बिल्कुल पेनलेस है. सो दैट्स अनदर रीज़न व्हाई इट्स सो अमेजिंग. इस क्रीम में 3 वेरिएंट्स आते हैं, तो ये है हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल. आज मैं यूज़ कर रही हूँ द क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट वेरिएंट फॉर नॉर्मल स्किन यूजिंग दिस स्पैचुला. आई एम अप्लाइंग द क्रीम ऑन माई लेग एंड आई कैन ऑलरेडी स्मेल द फ्रेश सेंट. In fact, आप नोटिस करेंगे the cream continues to smell good even after the application. क्रीम लगाने के बाद I'll wait for 3 to 5 minutes before removing it. See, लग रही है ना मेरी स्किन एकदम स्मूथ और मॉइस्चराइज. This is because the hair removal cream also exfoliates the skin और इसे रेगुलरली यूज करने से मेरे ingrown hair भी कम हो गए हैं. Big plus point for me is that this product is dermatologically tested. Having completed the hair removal process, it's time to wash off the hair mask with a gentle shampoo. अब मैं coin size amount of shampoo लूँगी to clean my scalp and hair. मैं एक sulfate free shampoo यूज़ करती हूँ since it's gentle on the hair. Now I'll apply the serum and gently comb my hair. इसके एकदम बाद मैं अपने favorite homemade body butter लगाऊंगी to keep my skin moisturized. Why immediately? ताकि ये स्किन में अच्छे से absorb हो जाए and the moisture is locked in. Homemade body butters are my favorite. You can take 1 cup of coconut oil, add 1 tablespoon of almond oil, and then add 8 drops of vitamin C essential oil and mix well. Once the oil is thickened, refrigerate it. Whip the thick oil mixture with 1 tablespoon of corn flour until it turns fluffy and creamy using a fork or a blender. Store it in a cool, dry place and you will have your very own body butter. It's very easy to make. मैं काफ़ी generous amount लेके अच्छे से अपनी स्किन पे मसाज करती हूँ. We have finally completed our long shower routine. I feel fabulous and I know you will too if you follow these steps. That's all from my side. मैं जल्दी ही आप सबसे वापस मिलूंगी. तब तक अपना ख्याल रखना और न्यू वीट प्योर हेयर रिमूवल क्रीम ज़रूर ट्राई करना. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you next time. Bye bye.